Hello everyone, I welcome you all to Ansarkari and I hope that you all must be doing great. So in this video, we'll be analyzing all the important articles from the perspective of their importance and relevance for the UPSC Civil Services examination. And this is going to be for 6th of April 2023. And as you know that we take up the important articles from 4 important newspapers, which includes the Hindu, the Indian Express, Financial Express, and Mint. So let's start with today's analysis. So Supreme Court says that critical views on the government policy is not anti-establishment. So it is important to have critical views. It is important even in UPSC whenever if you have given mains. So the question are framed in such a way even that they use the word critically analyze. So Supreme Court says that critical views does not mean that we are anti-establishment, we are anti-government. So that's there, and quote, it lifts the telecast ban on the Malayalam channel media one, and it says that unguided and ad hoc use of the sealed covers infringes the natural justice and open justice. So very, very key judgment. And ये केस रिलेटेड है एक मलयालम चैनल था जिसका नाम है मीडिया वन, तो उसके ऊपर टेलीकास्ट बैन लगाया हुआ था. सो उस बेसिस पे इस जजमेंट के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप क्रिटिकल व्यूज रखते हो ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर आप उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हो, यू फील कि उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स है या चीजें दूसरे तरीके से होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वी आर एंटी इस्टेब्लिशमेंट. एंड साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि अनगाइडेड एंड एड हॉक यूज ऑफ सील्ड कवर्स में अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो दैट वुड बी अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस एंड ओपन जस्टिस. So that's there. And Supreme Court's take was that independent press, it is vital for the robust functioning of the democratic republic. So independent press hona is very important. साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज या जो भी शेयर किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो प्रेस, इट हैज अ ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ टू पावर and a homogenized view on the issues that range from the socio-economic polity to the political ideologies that will present grave dangers to the democracy. अगर homogenic views basically अगर same views सारे news channel पे अगर मतलब obviously हमें देखने को मिलेंगे, and basically एक pressure रहेगा उनके ऊपर from the government side, we can say from the executive side. So that is not going to basically empower democracy. That would be a grave danger to democracy. So सारी बात घूम फिर के having critical view पे ही आगे रुकती है. So that's what the Supreme Court is saying. So this judgment is really very important for us. So Indian agency gets gear from the Pegasus rival. So an Indian defense agency, it has been purchasing equipments from an Israeli spyware firm that is being built as a potential Pegasus alternative. So Pegasus ka ek alternative, it might be coming up in India. So this is what this article is talking about. And the firm in question, that is, we are seeing ki it is possible ki ye firm, it can devise or it can innovate a new Pegasus rival, is the Cognite Software Limited, which faces a class action lawsuit in the US from the investors. So that's there. And moving forward, so our president is there for the inauguration of the Gaj Utsav 2023. And Gaj, we know, is elephant. Hindi may be, refer elephants as Gajraj. So it is, the venue is the Kaziranga National Park High School Field. So it's there in Assam, and this is organized by the government of Assam, that is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
would be looking into this. So we're celebrating 30 years of Project Elephant. So similar lines पे हमने ये भी देखा है कि Project Tiger के भी 50 years complete हो गए हैं. So it is important कि जितने भी conservation projects हमने start किए थे, कब start किए, and उनसे सारी important information हमारे लिए important हो जाती है. So प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. सो दिस इज द लोगो ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं हमें सबके बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इन द स्टेट ऑफ असम. सारे पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मूविंग फॉरवर्ड, so coming to the editorial section. So this bigger article, it is talking about South Asian drama. So a long view of the South Asian drama. So let's understand what it is talking about. Kis cheez ko it is referring to as the South Asian drama. So there's uncertainty, a defining characteristic of the South Asian politics, which looks set to increase. So it is talking about the South Asian politics, and उसमें uncertainty का कुछ element है, and it is saying कि it feels key that is going to increase in coming times, and beset by a multitude of the political, economic, and security crisis, Pakistan seems to be undergoing an implosion. हमें पता है, we have clarity about what is the situation in Pakistan, be it economic or the political situation or even the security, the social situation when we're talking about Pakistan. So even in South Asia जब हम challenges की बात करते हैं तो हम उनको different heads में divide कर सकते हैं. That can be political, economic, security, and social crisis, or challenges we can call them. So with the successive elections throwing up a hung parliament, prospects of political stability in Nepal, that also remains bleak. So यहाँ पे ये examples cite कर रहे हैं the author of this article कि why he is saying कि South Asian politics that is uncertain. So firstly he gave the example of Pakistan. Secondly he mentioned about Nepal. So नेपाल में हमने देखा कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, एंड उसके बाद फिर से देयर वाज जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको फिर से अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ी. सो इवन मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ है इन द पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल. So this is the second example. And then ahead of elections in Bangladesh, and enfeebled opposition is attempting to revert to agitation. So again यहाँ पे is mentioning about Bangladesh. So वहाँ पे भी basically situation इतना ज़्यादा calm नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी elections होने वाले हैं. So opposition party, it might create some kind of agitation. So that's there. And then talking about Maldives, so in a presidential contest that could tilt the balance between democracy and authoritarianism, it is in the offing. So Maldives में this is the situation, वहाँ पे presidential elections होने वाले हैं, and the situation is such कि either democracy would win or authoritarianism would win. Then coming to the example of Sri Lanka, so it is slowly recovering from an unprecedented economic meltdown. श्रीलंका की situation के बारे में जब भी कोई important article आता है हमने discuss किया है कि majorly श्रीलंका की economy it is dependent upon टूरिज्म सेक्टर, एंड क्या मेजर रीजन था जिसकी वजह से श्रीलंका की जो आज इकोनॉमिक सिचुएशन है, वी आर सीइंग दैट. सो व्हाट इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द current economic situation of Sri Lanka is, we have talked about this a lot, that is China's debt policy. So ये चाइना की जो डेट पॉलिसी है, इसके अंडर चाइना क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को इतना बिग अमाउंट ऑफ लोन दे देता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उस लोन के रीपेमेंट की बात आती है तो जिस कंट्री को लोन दिया जाता है इट फेल्स टू रीपे दैट लोन. सो उसकी वजह से ऑब्वियसली थिंग्स दे स्टार्टेड crippling down, and ऐसे एक chain बन जाती है चीजों की, and things they start to cripple down, and economy it seems to collapse. So that's when we can say कि ये एक China की tactics भी है to increase its influence and power in different countries which are there in South Asia, and it is trying to increase its influence even in West Asia. But वहाँ पे policy अलग है. So particularly for the South Asian region या Southeast Asia की अगर हम बात करें, so it is through this debt policy.
एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट, अगर हम यहाँ चाइना की बात ही कर रहे हैं, इट्स पर्ल ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, जहाँ पे इट इज बिल्डिंग इट्स नेवल बेसिस, या फिर इट इज कोलैबोरेटिंग विद सच कंट्रीज जिनके नेवल बेसिस है स्पेसिफिकली इन द इंडियन ओशन रीजन, चाहे यहाँ हम श्रीलंका की बात करें, हम म्यांमार की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो इन अ वे इट इज ट्राइंग टू encircle इंडिया in the Indian Ocean region. So that's what is the name of the policy, Pearl of Strings theory. So, talking about the unique Indian values, so situating India's relations with its neighbors squarely within the framework of the country's foundational values, Subramaniam began by observing that South Asian region it constituted an integrated civilizational area bound together by shared religions, languages, cultural traditions, blood ties, and in respect to the three largest countries, India, Pakistan, and Bangladesh, they have shared historical memories as well. So it is talking now, it is basically emphasizing now upon India and historical perspectives that the author is talking about. So starting में what he did was South Asia की अगर हम बात कर रहे हैं, politics की बात कर रहे हैं, instability की बात कर रहे हैं, तो कुछ countries का example लिया and then now he is shifting to India. So that is the approach of this article. And the values of secularism, democracy, federalism, linguistic autonomy, they were not matter of choice for India. So they were compulsions for India back then. अगर हमें इंडिया की यूनिटी या इंटीग्रिटी की बात करते हैं, अगर उनको प्रिजर्व करने की बात आती है, तो when we talk about secularism, democracy, federalism, linguistic autonomy, these were not choices for India. इंडिया के पास कोई choice नहीं था कि we need to adopt, we need to go on these lines or not. These were compulsions back then for India. And so that's there. And he's also saying ki India it pursued these values because they were not just imported Western values, but because they were absorbed and internalized during India's century-long freedom struggle. So ये values हमारे freedom struggle में भी कहीं ना कहीं internalize हुई, हमने adopt करी. So that is also one of the reasons why we went ahead with them. And democracy was no more an import than Islam or Christianity in India, which had a strong tradition of keeping its doors and windows open and absorbing influences from outside. So that's how he's saying कि even during freedom struggle in values की importance, adoption and relevance India में increase हो गई, and then we went ahead with them. And जब हम India के neighbors की बात करते हैं, तो even with Pakistan, Bangladesh and even to that matter Sri Lanka, we have some shared historical memories with them. So this area has been an integrated civilizational area which is bound together by different values, जहाँ तक कि हम religion की बात करें, languages, cultural tradition, blood ties. So that's how this region it is bounded together. So India की भी हमने बात कर ली. So India as a unity. Some of the India's neighbors, supported by sections of even the Western scholarship, they questioned the very concept of Indian integrity and unity. So Indian integrity and unity के ऊपर भी कुछ questions raise किए गए, and according to them, India was never united before the British brought the whole country under a single administrative structure. So this is one school of thought. Specifically, this is influenced by the Western scholars, जिनका मानना ये है कि बिफोर द ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया, उससे पहले इंडिया में कोई ऐसा सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था. एंड इट इज द ब्रिटिशर्स बेसिकली जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है they brought the whole country, whole India under this single administrative structure. So what was overlooked by these skeptics was 3 or 4 centuries ago, there were no nation states also anywhere in the world, and only tribes and principalities, kingdoms and empires were there. So however, and even at that stage in the world outside India, there was widespread recognition of India and Hindustan as a unity in terms of culture, civilization, and even the administrative structure. So, जब Western scholars ये बोलते हैं कि all the credit goes to the Britishers when it comes to having a administrative system, a proper structured and single and threadbare administrative structure. So उनको ये भी पता होना चाहिए कि even before that, जब हम civilizations की बात करते हैं in India, India firstly
ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई नेशन स्टेट्स नहीं थी, बट उस टाइम पे ट्राइब्स थी, प्रिंसिपैलिटीज थे, किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इंडिया, इट वाज रिकग्नाइज्ड, इंडिया की एक रिकग्निशन, एक आइडेंटिटी थी, वी वर नोन एज हिंदुस्तान। सो हम जाने जाते थे फॉर आर यूनिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर की बात कर लो, सिविलाइजेशन की बात कर लो, एंड इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सो ये चीजें पहले भी रिकग्नाइज की गई हैं, एंड इट वाज basically acceptable back then also. So you can't say ki all the credit goes to the Britishers when it comes to having a proper structural administrative system in India, or whenever we talk about the Indian values, or we talk about the Indian culture or the unity that we have always basically been witness to when we talk about India. So that's the another argument जब हम India as unity की बात करते हैं. And so if it is such shared historical memories that bind people together as a nation, and it is not the language and not the religion. So language और religion हमें united नहीं रखता है, जो हमने बात करी basically of historical memory. So यहाँ पे कुछ examples mention किए गए हैं, like be it the like entity which is Kanyakumari to Himalayas in the people's mind, or the concept of Lord of the Earth, that is a Sarvabhauma, which is called Lord of the Earth, who had performed Ashwamedh. Then we have the epics of Ramayana and Mahabharata. We have the Ashokan edicts or the mutts of Adi Shankara. We have the concept of India as a cultural civilizational unity which is differentiated from its surroundings, was several millennia old, and they formed the basis of our nationhood. So ये हैं important factors जिनको हम बोल सकते हैं these are the bases, these played an important role when it comes to forming India as a nationhood. या जब भी हम Indian values की बात करते हैं तो all of that is coming from them, and it is not from the Britishers, to be very specific and clear about this. So दिस इज व्हाट है वी आर सेइंग कि जब हम इन हिस्टोरिकल मेमोरीज की बात करते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग इंडिया टुगेदर, कीपिंग इंडिया यूनाइटेड, एंड इट इज नॉट द लैंग्वेज और द रिलीजन which is responsible for India's unity and integrity. So that is the whole explanation. And what are the keys to coexistence then? So from the above जो अभी हमने discuss किया specifically unity के context में and historical context में examples लेके, so from this the keys to peaceful coexistence in the subcontinent, अगर हम बात करें, so they are the ultimate key, and India, it should grow in the economic and technological terms, and as it does also, its neighbors, they will adjust themselves to the Indian reality and stop thinking in terms of invoking China and other extra regional powers as countervailing factors. So it is not India जिसको adjust करना है, जो भी technological changes हो रहे हैं, economically changes हो रहे हैं, geopolitically, globally अगर हम बात करें कि order is it is again reshaping या it is getting readjusted या restructured अगर हम बात करें, so it is not India which has to adjust. जो India के neighbors है, they have to come into terms with the reality and changing things and then adopt to them also. And obviously they cannot go for invoking China या फिर other extra regional powers as countervailing factors for India. So this will be a long-term process. Obviously इसमें time लगने वाला है, and India should develop its military power in order to shield itself from the turbulence around it and be ready to respond to the pressures of this age of coercive diplomacy. So obviously militarily defense sector में हमें obviously अपना expenditure increase करने की ज़रूरत है, या नहीं भी है तो we need to have the updated technology with us, updated arms, and we need to be ready. So चाहे वो और ज़्यादा defense expenditure increase करके हो या किसी और तरीके से हो, so we need to go ahead with that. So India's diplomacy, it is as distinct from its AIDS programs, trade and people-to-people interaction. It should place less emphasis on its South Asian neighbors and focus more on its relations with China, USSR, which is now Russia, US, and the industrialized world, Southeast Asia, West Asia, and Africa. So, instead of, this is one thing that is in terms of the foreign policy, the author is saying कि हमें जब हम साउथ एशियन नेबर्स की बात करते हैं, so साउथ एशियन नेबर्स basically it is talking about Nepal, Pakistan,
Sri Lanka, Myanmar. So instead of, focusing upon strengthening our relations with these particular neighbors, हमारा main focus होना चाहिए strengthening our relations with countries like China, Russia, US, industrialized world की बात करें, Southeast Asia की बात करें, West Asia and Africa. So these are the hotspots, and India's neighbors, specifically Pakistan, want to play a very low key role in South Asian Association for Regional Cooperation, which is SARC, and India should do exactly that and exercise extreme patience till such time as its neighbors realize how much it can help them in their nation building and development. So India को तब तक चुप रहना चाहिए. Why we need to, come forward when it comes to this thing. And reciprocity, it is obviously a basic requirement for cooperation on issues, चाहे river waters से related कोई issue हो या use of natural resources. But once the principle of reciprocity that is accepted, India should go the extra mile and then be generous. So reciprocity basically give and take की जब हम बात करते हैं, so obviously that is one of the most important bases जब हम cooperation की बात करते हैं in terms of different countries, चाहे कोई issue से related हो या कुछ भी हो. So reciprocity is very important aspect when where like अगर हम foreign policies की भी बात करते हैं. So written at a time when the world it was a different place, Subramaniam's words, they are both reassuring and they are cautionary at the same time. And amidst the polarized discourse of our times, they are more relevant than ever. So above all, they underscore the inextricable linkages between the foundational values which are underpinning India's nationhood and the great power stated that India legitimately aspires for. So this was all in all, it was a very important article that we discussed all the nitty-gritties around it. So again, we are seeing resurging oil prices. Oil prices per se increase हो रहे हैं. That is majorly because of one decision OPEC Plus has taken to reduce the crude oil output. And then the next thing is tight money. It may dent consumption and investment hopes at the same time because borrowing cost भी increase हो रही है because of tight monetary policy. So उसकी वजह से investment growth के ऊपर obviously direct impact हमें देखने को मिल सकता है. So these are some of the economic challenges we can say. And recently we saw that two multilateral institutions, they presented their regional economic outlook for the year, scaling down their projections for India's growth prospects. So here we're talking about World Bank. So ये हमने कल देखा कि it provided two important reasons for this downgrade. One was this the rising borrowing cost that would hurt otherwise resilient consumption demand जो अभी तक हमें इंडिया में देखने को मिल रही है, and also the government consumption, it will likely contract, while services sector growth, it will slip to 3 years low of 6.7%. So that has been downgraded. And then we have the Asian Development Bank, which also noted that a rebounding China's and India's domestic demand, which it believes it will likely stay healthy, it would lift up Asia's growth prospect. So definitely जब हम एशियन सेंचुरी की भी बात करते हैं तो इंडिया एंड चाइना का इम्पोर्टेंट रोल है. सो यहाँ पे द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सेइंग कि रीबाउंडिंग चाइना, रिसेंटली चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर दी थी बिकॉज आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक एवरीथिंग वाज शट डाउन एंड restrictions बहुत ज़्यादा इम्पोज की गई थी. सो रिसेंटली वी कैन से कि चाइनीज इकोनॉमी इट हैज़ रीओपन्ड एंड इट इज़ रिकवरिंग बैक. एंड डेफिनेटली इंडिया में जो डोमेस्टिक डिमांड है, चाइना की जो डोमेस्टिक डिमांड है, दे आर गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहाँ तक कि हम एशिया की ग्रोथ की बात करते हैं. एंड इंडिया के लिए अगेन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको कम कर दिया है, साइटिंग रीजंस जो उसने दिए हैं या साइट किए हैं, दैट इज टाइट मॉनेटरी कंडीशंस एंड देन फेडिंग ऑप्टिमिज्म ऑन द बिजनेस कंडीशंस दैट इट रेकन्ड वुड लीड टू लोअर ग्रोथ इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. सो मेजरली दो चीजें ही हमें देखने को मिल रही है, राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट एंड या उसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज दी जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. सो ये दो मेजर रीजंस हैं जिस वजह से बेसिकली जो हमारी जीडीपी फोरकास्ट है उसको कम किया जा रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज डोमेस्टिक इश्यूज, ऑफ कोर्स both the institutions, they have also cited the effects of existing challenging conditions even in the global economy. So not just the domestic reasons, ये दोनों domestic reasons हैं, but और भी ग्लोबली भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है
हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी राइट नाउ चैलेंजेस की हम बात करें, सो उसकी वजह से भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ, इवन अगर हम माइनर इम्पैक्ट की भी बात करें, बट येस कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा ऑन दी इंडियाज ग्रोथ. सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड अगर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस हैं, तो रिसेंटली हमने देखा 2 बैंक फेल हुए थे इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. एंड देन अगेन कुछ कंसर्न्स अबाउट द ऑयल प्राइसेस दैट इज अगेन रिसर्जिंग. सो दैट्स अनदर रीजन. एंड ऑल्सो जो वर्ल्ड डिमांड है दैट इज ऑल्सो स्लोइंग डाउन. सो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द ग्लोबल रीजंस जिसके वजह से जो हमारी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ है, उसको एज अ चैलेंज दे आर देयर. सो यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने कल इम्पोर्टेंटली इस टॉपिक को डिस्कस किया था. जो भी इसकी की आइडियाज थे या जो भी की फैक्ट्स थे वो हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो विल नॉट बी टेकिंग अप दिस थिंग अगेन टुडे बिकॉज इट वुड बी अगेन सिंपली अ रिपीट एंड वी अवॉइड दैट थिंग. सो जुडिशियल पेंडेंसी की अगर हम बात करें, ये भी हमने थोड़ा सा कल मेंशन हुआ था न्यूज़पेपर में. सो वी टुक दिस थिंग अप एंड थोड़ा डेटा भी था. सो वी आर सीइंग कि close to half the cases in high courts they are pending for over 5 years. So around आधे जो cases है in high courts they are pending for more than 5 years. So 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, they have been pending. And the dependency of the cases, the pendency of the cases in the courts, it's a demand and supply problem. So demand and supply problem basically vacancies बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हम बोल सकते हैं cases का जो supply है या फिर जो justice के लिए demand है वो बहुत ज़्यादा है compared to the number of judges. So with fresh cases they are also increasing and the number of judges वो stagnant है. So जो ये pace से cases increase हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है compared to the rate of growth of number of judges that we have in India. So उसके वजह से we are saying it is a demand supply problem. And इसके क्या solutions हो सकते हैं हमारे लिए वो important है. So this is India Justice Report 2022, जिसका data we have here, and this ranks the states based on policing, judiciary, prisons, and legal aid. So that's there. And this chart one, it is talking about the case clearance rate for the high courts in different states for the past 5 years. And here the entire data, it is in percentage form. So the case clearance rate, अगर हम बात करें, it is जब हम highest रेट की बात करें तो इट इज देयर इन केरला एंड इट स्टैंड्स एट 156%. हम सिर्फ 2022 की बात कर रहे हैं. सो हाईएस्ट वन इट इज रिकॉर्डेड इन केरला, एंड then we have it in Odisha, we have it one of the highest one in even West Bengal, Meghalaya, then Jharkhand, Haryana also is there, Bihar is also a part of it. So एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि which all states they are performing nicely. And moving forward, so इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है for that topic. So sugar production, it falls in the past 6 months, in the first 6 months of the previous financial year. So we have the Sugar Mills Association, Indian Sugar Mills Association, and the production, it is basically, it stood at 309.9 lakh tons in the corresponding period of the previous year. So right now it is at 299.6 lakh tons. So NPCI's new circular on the levy charges. So UPI payments की हम बात करने वाले हैं, and what are basically the prepaid payment instruments that we have and that are currently which are functioning there, and why did RBI it mandated interoperability among the different PPI issuers, and how has this affected the customer. So इसका effect on the customers and merchants क्या होने वाला है. So let's understand क्या steps लिए गए हैं and जो important टर्म्स रहेंगे उसका मीनिंग समझेंगे, एंड उसका देन अगेन विल कम टू द इम्पैक्ट जो भी अभी रिसेंटली डिसीजन लिए गए हैं. सो पास्ट वीक में वी सॉ द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट गवर्न्स द यूपीआई पेमेंट्स, एंड उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया डायरेक्टली टू द बैंक्स व्हिच इंटिमिडेटेड दैट दे कैन नाउ लेवी चार्जेस
on the merchant transactions made through the prepaid instrument wallets using UPI. सो जो मर्चेंट ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे यूजिंग यूपीआई उन पे लेवी चार्जेस एप्लीकेबल होंगे एंड ऑब्वियसली बैंक्स दे कैन गो अहेड विद दिस थिंग. सो दिस वाज द सर्कुलर जो बात की जा रही है. And then also the National Payments Corporation of India later on एक clarification भी आया stating कि जो बैंक टू बैंक UPI transactions होंगे उन पे कोई charges नहीं होंगे and that customers they will have to pay for the transactions which are made via the prepaid instruments on UPI. So उस पे सिर्फ चार्जेस हैं जो मर्चेंट पेमेंट्स आप करोगे यूजिंग द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड अगर आपको कोई बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है थ्रू यूपीआई so there are no charges on that. So it said that the new interchange charges they are only applicable for the prepaid payment instruments merchant transactions. So the interchange fee generally that is associated with the card payments to cover the transaction cost, it is now brought even the PPI wallets also under its fold. So what are these prepaid payment instruments? ये क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? So these are payment methods जो आप use कर सकते हो to purchase goods and services, and then you can also use it to send or receive money by using the stored value in your wallet as per the money you have. And users they have to preload the wallet with the desired amount. So basically different apps जो phone पे app हो गई and Paytm हो गया, भीम पे हो गया. So all of these apps are there जो हम बोल सकते हैं these are prepaid payment instruments. So आपको पहले पैसा लोड करना पड़ता है जिन apps में and then you can transfer the money. After that you can buy goods or services. So that is the meaning of PPIs. So the amount it can be loaded, it can be reloaded against the cash or through the debit to the bank account or using credit or debit cards. So that's there. And the PPIs they can only be used in Indian rupees में आप उनको use कर सकते हो and they can be in the form of मोबाइल वॉलेट्स हो गया, जो फिजिकल स्मार्ट कार्ड्स है इवन दे आर अ फॉर्म ऑफ पीपीआईज, सिक्योर टोकन्स हो गए, वाउचर्स हो गए और एनी अदर मेथड दैट अलाउज एक्सेस टू द प्रीपेड फंड्स, वो सब पीपीआई के अंडर कवर किया जाता है, नॉट जस्ट द मोबाइल वॉलेट्स. So now coming to the PPI's interoperability. So previously to use PPIs at any merchant, it was necessary that the concerned merchant that was engaged directly by the specific PPI user, specific network के साथ direct linkage या usage होना चाहिए था when we're talking about the merchant and the usage of PPI. And all PPIs with which the merchant did not have a direct tie-up नहीं था, so they were rejected. So the most prevalent form of PPI which is used in the country is the mobile wallet. So mobile wallet का सबसे ज़्यादा use होता है जब हम PPI की बात करते हैं. And this restriction जो थी कि अगर merchant और PPI जो भी interface है उसके बीच में direct tie-up नहीं होगा, so you can't go ahead with the PPI payments. And ये restriction it meant that the customers of one specific mobile wallet they could spend the money in the wallet only at specific merchant locations. Obviously जहाँ पे facility available हो गया आप वहीं पे ही इस instrument को use कर सकते थे. So यहाँ पे example भी दे रखा है, so you can go ahead with that. Will not take this thing up because we have the clarity कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. And so यहाँ पे it is mentioning कि how does this PPI interoperability works through the UPI. So इसमें भी नहीं जाएंगे. So do merchants they have to pay for accepting these wallet transactions on UPI or not? So जो PPI enabled merchants है they were already paying the charges to the PPI issuer for the acceptance of mobile wallets, the prepaid cards. So जो ये merchants है इनको पहले से ही before the taking up this decision of levying the charges on merchant transactions which would be made through PPI, इससे पहले भी merchants they were paying some kind of fees या charges to the PPI issuers जब भी उनको merchants को कोई पेमेंट मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू या प्रीपेड कार्ड्स के थ्रू they were accepting from the customers. So now the charges they are aligned at a network level with some standardization. अब standardization हो गया of the charges जो पे करने पड़ेंगे. And however each merchant it can work with their preferred acquiring entity. And now for using these PPI such as gift cards wallets for transactions on UPI,
An interchange fee of up to 1.1% it has been levied from 1st of April. So fix कर दिए हैं charges, and charges they are applicable अगर आप transaction कर रहे हो of more than rupees 2000. So 1.1% fees देनी पड़ेगी, and if you are a merchant and you are accepting UPI payments from customers bank account, then there are no charges applicable. So अगर आप एक merchant हो अगर and आप customers से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो थ्रू यूपीआई फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, तब कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है. So charges, they would only be applicable if you have accepted or consented for the transactions made using PPI wallet. अगर wallet के through you are basically accepting the PPI payments, तब charges applicable होंगे. अगर UPI payments directly bank account से की जा रही है, तब कोई charges नहीं है. So दैट इज वन थिंग. सो मर्चेंट्स के लिए बेसिकली ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इस चीज में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा टू द मर्चेंट्स. सो दैट्स देयर. एंड आर देयर एनी चार्जेस टू बी पेड बाय कंज्यूमर्स व्हिच आर होल्डिंग वॉलेट्स फॉर द पीपीआई ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस? सो क्या कस्टमर्स को भी कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे? यहाँ पे अभी तक तो हमने सिर्फ मर्चेंट की बात करी कि मर्चेंट को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एंड उसका अब स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है, एंड बैंक अकाउंट से जो यूपीआई पेमेंट्स होंगी उस पे कोई चार्जेस नहीं है फॉर द मर्चेंट्स. बट कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, सो ऑफिशियली देयर आर नो चार्जेस जो कंज्यूमर्स को पे करने पड़ेंगे, जो कस्टमर को पे करने पड़ेंगे. However, merchants they may pass on this additional burden to the customers by way of the price increase or some other means. So since merchants के ऊपर जो burden है of paying these charges वो increase हो गया है, तो indirectly जो merchants हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रहे हैं, सो वो उस पेमेंट को इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग इन सेलिंग, वो इंक्रीज कर सकते हैं. एंड इनडायरेक्टली बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जा सकता है, बट डायरेक्टली एज फ्रॉम द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसा कस्टमर्स को कोई चार्ज या कोई फीस पे नहीं करनी है. सो स्टे विजिलेंट एंड बी अवेयर कि आप लोगों को कोई ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि एज अ कस्टमर you have to pay certain amount if you are going ahead with UPI PPI payments. So that's there. सो व्हाट आर दीज ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट जो हमें देखने को मिल रही है? कल भी हमने बात करी ट्विटर की. सो व्हाट आर दी आईपीआई राइट्स ऑन द सीड्स एंड हाउ आर दे इनहिबिटिंग द फ्रीडम टू इनोवेट विद इन द सीड सेक्टर? सो यहाँ पे हम सीड्स की बात कर रहे हैं, ओपन सोर्स सीड्स. कल जो अब हमने ट्विटर की बात करी थी वो दैट वाज इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में, बट है वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट. सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे, एंड क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द इनहिबिटिंग फैक्टर्स टू द फ्रीडम टू इनोवेट विद इन द सीड सेक्टर. सो आप फ्रीली क्यों नहीं इनोवेट कर सकते हो in terms of the seed technology? So farmers, they have definitely innovated and they have shared the seeds without any intellectual property rights for centuries. So इससे पहले अगर हम देखें, अभी चीजें इतनी एडवांस हो गई है, वी आर इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो बिफोर दैट फार्मर्स जिन्होंने पहले, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, गोइंग टू द हिस्ट्री, जब फार्मर्स ने कुछ इनोवेशंस करी थी इन टर्म्स ऑफ सीड्स, सो उस टाइम पे ऑब्वियसली ये टर्म भी नहीं थी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो दे वर फ्रीली शेयरिंग द सीड्स जो भी उन्होंने इनोवेशन की विद देयर लाइक कम्युनिटी एंड द fellow farmers for centuries, and they also haven't sought any exclusive rights over the seeds and germplasm to prevent others from innovating on the seeds. So ऐसी कोई बात पहले होती नहीं. So however, with the emergence of the global IPR regime जब से आया है over the plant varieties, there was a dire need to these dire need to open source seeds. So उसके बाद से जब से ये global IPR intellectual property rights regime आया है, we felt, तब से हम ये बात कर रहे हैं ऑफ द ओपन सोर्स सीड्स. सो व्हाट आर दीज plant breeders rights and patents? So advent of the hybrid seeds, scientific plant breeding and other factors which confer developers of the new varieties with the so called plant breeders rights की यहाँ पे बात की गई. जो भी farmers या जो भी scientists, they were involved in development of seeds, and
पेटेंट्स की बात की गई, सो पर्टिकुलरली ये यूएसए से स्टार्ट हुआ. सो इन दिस रिजीम राइट्स होल्डर्स दे कुड डिमांड रॉयल्टी ऑन द सीड्स. सो रॉयल्टी की बात की गई एंड लीगली इन्फोर्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑल्सो. So in some national IPR regimes, rights holders they can also restrict the unauthorized use of the seeds to develop new varieties. So ये कुछ restrictions आ गई. फिर obviously IPR आया, हमने plant breeders की rights की बात करी, patents की बात करी. So आप जो भी नई seeds आई, innovations आए in terms of seeds, तो with rights there also came certain restrictions कि those seeds they were not further allowed for any unauthorized use जो आगे new varieties की development में help कर सकती है. So unauthorized use was not permitted. And in 1994 we had the establishment of the World Trade Organization, and it cast a global IPR regime over the plant varieties. So we had this TRIPS agreement. TRIPS, it stands for Trade Related Intellectual Property Rights Agreement. As per this TRIPS agreement, it required the countries to provide at least one form of intellectual property protection. So जो भी member countries थी of WTO and TRIPS agreement, they were signatory to this agreement. So as per this, they required at least one form of protection for the IP, and this consolidation of the rights in the seed sector, it raised concerns about the freedom to innovate. So obviously जो आपकी freedom to innovate है उसके ऊपर कुछ restrictions आ गई with these IPR rights. So unlike the Green Revolution, which was spearheaded by the public sector institutions, so Green Revolution में भी जो new technology आई in terms of even seeds, जो seed varieties develop की गई, so they were basically done by the public sector institutions, and जो genetic revolution in agriculture was there, it was led by the private sector. So with seeds, mostly they were availed as hybrids or protected by strong IPRs. सो ऐसा जब भी कोई इनोवेशन हुआ मेजरली इन टर्म्स ऑफ द सीड्स वैरायटी, अब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन राइट्स आने लग गई हैं. आप फ्रीली यू कांट गो अहेड विद दोज न्यूली डेवलप्ड और इनोवेटेड वैरायटीज टू फर्दर डेवलप मोर एफिशिएंट. जो भी अगर आपको लगता है कि यू कैन गो अहेड विद दैट, सो देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम टू इनोवेट इन टर्म्स ऑफ दैट. So how is IP it is protected in the agricultural sector में आप कैसे intellectual property rights को protect करते हो? So majorly two ऐसे major modes हैं of IPR protection in agriculture. एक तो हम बात करते हैं plant breeders rights की and patents. So together they restrict the farmers' rights and the freedom to develop the new varieties using the germplasm from the IP protected varieties, and they have thus increased the number of IP protected plant varieties also. So obviously उनका number तो increase हुआ ही है जब से we have these plant breeders rights and patent. So ये दो तरीके हैं जिससे जो agricultural sector में intellectual property rights को protect किया जाता है. And India में commercially अगर हम बात करें, so we are using the BT cotton seeds, and as public sector breeding declined after this and the private sector it began to dominate the seed sector, so the need for alternatives also became keenly felt. So जब से private sector का role increase हुआ है, we are looking for more alternatives, and this is when we are talking about the success of open source software inspired a solution. So 1999 में plant breeder named T.E. Michael suggested an approach to seeds innovation which was based on the principles of open source software. So जब से इतनी ज्यादा restrictions आ गई उसके बाद we had this thing of open source software in terms of seeds innovation. So अब हम बात करेंगे कि what is this open source seeds, ये होती क्या है. So 2002 में had this personality and the author they proposed an open source model for the seeds and plant varieties, and scholars and civil society members they built on it. So उसके बाद से अब open source seeds की भी बात होने लग गई, and एक similar initiative यूरोप में भी लिया गया by Germany, and in
Agricol's model, the user agrees inter alia to not patent the seeds bought under the open source license. So अगर आपके पास open source license and you're buying the seeds under using that license, so जो भी seed variety है उसके ऊपर कोई patent नहीं होगा. And in the US also, this open source seeds initiative opted for a pledge based model for sharing the seeds. So basically थोड़ा liberalization की बात करता है open source model. And India में अगर हम बात करें तो we have the Center for Sustainable Agriculture in Hyderabad. It has also developed a model that included an agreement between the CSA and the recipient of the seeds. So it is basically trying to use this approach through 3 farmer producer organizations which are engaged in the seed production. So India में we have the India's Plant Variety Protection and Farmers' Rights Act of 2001, and farmers अपनी जो varieties हैं वो they can get it registered under this act, and if they meet certain conditions which are mentioned, and they have the right to reuse, replant and exchange the seeds. So ये कुछ rights की भी बात करती है this act, and however they can't breed and trade in the varieties which are protected under this act for the commercial purposes. So आप breed नहीं कर सकते हो या trade नहीं कर सकते हो उन those particular seed varieties for the commercial purposes under this act. However, आपके पास right है to reuse, replant and exchange those seeds under this act. So one potential application of the open source approach is to use it in a farmer-led seed conservation and distribution systems. So there are many traditional variety conservation and sharing initiatives in India involving the farmers, and many of them they focus on traditional varieties that are unique to specific regions or sites, or they have specific features. So the model, it can also be used to promote the farmer-led participatory plant breeding exercises. So this was all the important details when we are talking about. Initially हमने देखा कि कैसे IPR regime आया, how we came up with patents and उनको strongly enforce किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा restrictions हमें देखने को मिली in terms of the freedom you had to innovate the seeds. Then we had this thing of open source seeds movement, जहाँ पे हमने थोड़ी liberalization and freedom की बात करी. Now moving forward. So political leaders, they cannot claim higher immunity as per the Supreme Court. So after the court tells them that they were on the same footing as the ordinary citizens, 14 opposition parties, they withdrew their petition seeking stringent procedure for arresting the political leaders. So a political leader is basically a citizen, and as citizens we are all amenable to the same law. So अगर आप पॉलिटिशियन बन जाते हो तो ये नहीं कि आपके लिए कोई सेपरेट लॉ है, यू आर स्टिल आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन रहते हो इंडिया के, एंड जो बाकी लॉज बाकी सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस के ऊपर भी सेम लॉ ही एप्लीकेबल होंगे. सो पॉलिटिकल लीडर्स दे डू नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ इम्यूनिटी. अगर आप कोई बहुत बड़े फेमस पॉलिटिकल लीडर बन जाते हो, इफ यू लाइक यू आर सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इम्यूनिटी पावर आ जाती है एंड आपके ऊपर जो आम आदमी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल है आपके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. So that is one takeaway. And moving forward, so government has also introduced this aquaculture bill in Lok Sabha, and we have seen that Parliament is not able to function smoothly. There have been so many disruptions. So recently competition bill भी pass किया गया and it is awaiting the president's consent. But अभी here we're talking about the aquaculture bill that has been introduced. वो अभी just introduce किया गया है. So Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, and this bill, it is it has been introduced by the Fisheries, Animal Husbandry and the Dairy Ministry. So this is the ministry concerned with this bill. So it is earlier 2005 May, it has been there for promoting the ease of doing business in aquaculture, and it is also aimed at fine-tuning the operational procedures of the Coastal Aquaculture Authority and promoting newer forms of
environment friendly coastal aquaculture, which have the potential for creating additional employment opportunities. So, this is one of the main objectives of this bill, and it is also having a provision to prevent the use of antibiotics and the pharmacologically active substances which are harmful to the human health in the coastal aquaculture. So इतना ज़्यादा antibiotics के ऊपर rely ना करना and ऐसे substances use करना which can harm the human health that have been prohibited under this bill, and also it is talking about promoting newer forms of environment friendly activities in terms of the aquaculture sector. So आप थोड़ा और find out कर सकते हो about the coastal aquaculture authority that we have there. So speeches of Prime Minister and President, they are going to be aired on Amazon Music. And the Information and Broadcasting Ministry is concerned and related to this thing. So the speeches would now be available on they would be basically streamed via Alexa and the Amazon Music. So India gets elected to the UN Statistical Commission, and India has been elected to this highest statistical body of United Nations for 4 years. And our External Affairs Minister is congratulated for this achievement through Twitter. So India secured 46 out of 53 votes in this election to the UN Statistical Election Commission's election. So this body becomes important for us, and you need to find out more about this. So Mulayam Singh Yadav and Mahalanobis, they get the Padma Vibhushan honor posthumously. So this award has been conferred recently. So Mulayam Singh Yadav, who's also India's defense minister and a long-time parliamentarian, and Mahalanobis, who returned from USA to serve in the 1971 Bangladesh war refugee camps, where they were given the honor posthumously. So Dilip Mahalanobis, he was a medical professional, known from basically belonged to the medical professional. He was known globally for his work on the oral rehydration solution. So, like we can find out more about this oral rehydration solution. And lumpy skin disease led to the stagnation in the milk production in India. So, as per the center, this information has been provided. An increase in the prices of the fodder and its scarcity, that was another reason for inflation in the cost of milk. So, we have been seeing that obviously milk prices and then the byproducts from milk like ghee, butter, we are seeing shortage, and because of that, inflation हमें देखने को मिल रही है. So that is basically obviously demand supply mismatch. It is in short the key word that is responsible for inflation in this area. Coming to the world page now. So USA and South Korea, they hold the air drills involving B-52H strategic bombers, and obviously North Korea bhi kuch karega to this. So North Korea views such exercises as rehearsals for invasion, and it has responded to other recent drills with a spate of increasingly provocative banned weapon test. So obviously North Korea का मानना ये है कि जो ये drills की जा रही हैं, this is basically a type of rehearsal. आने वाले टाइम में इन्वेजन किया जाएगा, एंड जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया इन्वोक कर रहा है, प्रोवोकेट कर रहा है, इट इज बेसिकली थ्रू यूजिंग द टेस्ट, इट इज गोइंग अहेड विद टेस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ बैंड वेपन्स, एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसके टाइम टू टाइम टेस्ट किए जाते हैं बाय नॉर्थ कोरिया.
So, as per a study, SARS-CoV-2 virus, it is not found in the animal samples from the Hunan seafood market. So, that's there because एक ये point of view है कि COVID-19 it started from China's Hunan seafood market. So SARS-CoV-2 के कोई ऐसे virus samples नहीं मिले हैं from that market as per a study. Coming to the business page, so services PMI it signals a slowdown in the sector's growth in the March, and no fresh hiring has been reported by 98% of the firms that had been surveyed under this index, and overall level of positive sentiment that is also declining. So this is also the case even in the manufacturing sector. And बहुत सारी companies हैं which do not foresee to change, they do not see any kind of change from the present levels in the coming times. So services PMI basically slowdown की तरफ point कर रहा है. And while we see that input cost inflation that has eased to the lowest since September 2020, so input cost inflation definitely come hui hai, but despite that, firms they reported higher expenses on food, fuel, transportation, and wage cost that has increased. So services providers they has passed on the higher cost by raising the selling prices at a 3-month high pace. So IFC says to stop funding the new coal-related infrastructural projects. So the International Finance Corporation, which is a private sector arm of the World Bank, so it is saying ki it will not support any kind of investments in the new coal-related projects. So infrastructural development for any coal-related projects that would not be supported by the International Finance Corporation. So एक private sector arm है of the World Bank. So they are not going to provide any kind of support for this thing in future. So IFC basically it funds banks and other financial institutions that in turn they further lend for the infrastructure and energy projects. And it is reportedly lent close to around dollars 5 billion to almost 88 financial institutions in India. So this year, that is 2023, IFC, it is taking the next step towards alignment with the Paris Agreement ambitions, under which it is said कि कोई भी financial support नहीं provide किया जाएगा for infrastructural development for any type of coal project. So coming to the Mint newspaper. So here, what can we expect from the MPC meeting, Monetary Policy Committee meeting, जो कि अभी recently होने वाली है. So this graph is basically showing कि कैसे repo rate में क्या trend रहा है. So 2020 में it was around 5%, but उसके बाद it declined to 4%, and then for rest of the time period 2022 तक, so almost 2 साल तक we can say कि repo rate 4% level पे चल रहा था. But then we had the COVID-19, उसकी वजह से inflation बहुत ज़्यादा increase हो गई. And reason क्या था inflation increase होने का? That was supply side factors. Demand side factors were not the major reason which led to increase of inflation. But हमने किया क्या कि as a solution या फिर to control या contain down inflation, we came up with the demand side measures. So demand side measures is tight monetary policy, and repo rate हम gradually increase करने लगे. You can see how it is climbed up, and right now it is at 6.5%. But inflation हम कम नहीं कर पाए हैं. So I believe as per my analysis and observational skills जितना भी मैंने पढ़ा है कि अगर inflation increase हुई है because of the supply side factors, तो supply side measures ही हमें help कर सकते हैं in bringing down inflation.
सो सप्लाई साइड मेजर्स में ऑब्वियसली इकोनॉमी स्लोली हमने ओपन अप करी है, एंड सप्लाई रीस्टोर जितना ज़्यादा होगा कंपेयर टू द डिमांड दैट वी आर हैविंग, उतना ज़्यादा हम फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, फूड इन्फ्लेशन इट इज़ वेरी हाई राइट नाउ, तो उसको भी हम कम करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड रेपो रेट का ऑब्वियसली रिजल्ट हम देख ही चुके हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने डिमांड साइड मेजर लिया भी है एंड उस पर हम आगे गए हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, उसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जो आने वाले टाइम में हमारे ग्रोथ रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ फोरकास्ट भी आने वाले टाइम के लिए कम किए जा रहे हैं बाय वर्ल्ड बैंक। वी टॉक अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने भी यही रीजन दिए कि बिकॉज ऑफ राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट एंड जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोस्पेक्ट्स है वो इतने ज्यादा ब्राइट या फिर अट्रैक्टिव नहीं है, सो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ही होगा। सो रेपो रेट की वजह से इन्फ्लेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको हम कम नहीं कर पाए हैं, जो टारगेट रेंज है उसके अंदर आज तक इन्फ्लेशन नहीं आई है अभी तक। इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, एंड स्टिल वी आर सीइंग कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिला है। सो is it the right time to now talk about bringing down the inflation, या उसको कम करने की जरूरत है या नहीं? सो लेट्स सी कि अभी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या मीटिंग रहेगा, बट दिस इज द क्लियर बैकग्राउंड जो अभी मैंने आपको मेंशन किया कि सप्लाई साइड मेजर्स होने चाहिए, डिमांड साइड मेजर्स हमें हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि जिस रीजन की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है वो सप्लाई साइड रीजन है, डिमांड साइड रीजन तो है ही नहीं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो जो लास्ट एमपीसी मीटिंग हुई थी ऑब्वियसली उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज किया गया था, एंड उसके बाद इट इट वाज एट 6.5% लेवल, एंड it continued with its policy stance of withdrawal of accommodation. So सिक्स्थ सक्सेसिव हाइक था, एंड कम्प्लीटली अगर हम टोटल रेपो रेट हाइक की बात करें तो अभी हमने देखा कि 4% लेवल पे चल रहा था फॉर द 2 years, उसके बाद नाउ इट इज एट 6.5%, सो ऑलमोस्ट 2.5% का इंक्रीज या हाइक हम देख चुके हैं इन द रेपो रेट। सो यूएस फेड का क्या व्यू है ऑन रेट हाइक? सो इसमें एक और चीज है कि यूएस फेड और इंडिया में जो रेट हाइक्स किए जाते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, एंड इसकी भी हमने कुछ दिन बात करी, न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आए व्हिच इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज अ नीड ऑफ डीकपलिंग द लिंकेज बिटवीन दीज टू, कि जब भी यूएस फेड अपना रेट हाइक करता है उसके बाद इमिडिएटली जब भी हमारी नेक्स्ट पेंडिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है आरबीआई भी रेपो रेट इंक्रीज कर देता है, तो एक डायरेक्ट लिंकेज है, एंड उसकी वजह से इवन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कैपिटल मार्केट्स पे भी होता है, जो हम अभी देख रहे हैं कि एफपीआई पोर्टफोलियोज इंडिया की मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं बाय सच अ ह्यूज अमाउंट, दैट इज सोली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दिस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन लिया जाता है ऑफ इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट्स एंड द रेपो रेट्स। So March 2023, it witnessed the collapse of sixth largest bank in the US, which was the Silicon Valley Bank. And this was the largest after 2008 financial crisis के बाद, this was the largest bank to fail. So recently ये bank fail हुआ in USA, and this was followed by Signature Bank. So एक और bank fail हुआ, which was Signature Bank. And New York-based First Republic Bank also plunged into crisis with its shares crashing. So एक और bank, we can say it is on the verge of almost being on the crisis situation, and share prices यूरोपियन बैंक्स में भी इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, they were also hit hard by this banking turmoil. So US Federal Reserve last month it has increased its key benchmark interest rates in spite of the banks failures. So इसके बाद भी यूएस फेड ने जो इंटरेस्ट रेट था उसको इंक्रीज किया, and however it did give the indications of the rate hike spree nearing its end. So कुछ indications हमें जब से ये बैंक फेलियर के इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले, ये एपिसोड्स देखने को मिले हैं, उसके बाद से कुछ हमें ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं या कुछ ऐसा हमें जानने को मिल रहा है, कहीं पे सुनने को मिल रहा है, कहीं पे पढ़ने को मिल रहा है कि इट माइट बी पॉसिबल कि अभी जो रेट हाइक की साइकिल चली आ रही है ये इट इज ऑलमोस्ट नियरिंग इट्स एंड, एंड आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा पॉलिसी रेट हाइक्स हमें नहीं देखने को मिलेगी। सो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी रिसेंटली सेड कि देयर इज अ नीड टू कंसिडर वेदर डीरेगुलेशन मे हैव गॉन टू फार और नॉट।
सो इंडिया की इन्फ्लेशन कैसे ट्रेंड कर रही है अभी अगर हम बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन इट इज एट 6.44% फेब्रवरी में, एंड जनवरी में इट वाज 6.52%, सो मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है। बट अगर हम सेफर टेरिटरी की बात करें कि एग्जैक्ट रेंज, अगर एग्जैक्ट टारगेट की बात करें ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट बाय आरबीआई, तो इट इज 4%, एंड अगर हम इन्फ्लेशन रेंज की बात करें तो इट इज 2% to 6%, बट डिस्पाइट दैट अभी 6% से ज्यादा ही इन्फ्लेशन चल रही है। सो फूड इन्फ्लेशन दैट ऑल्सो रिमेन क्लोज टू 6% ड्यू टू सीरियल एंड मिल्क प्राइसेस। वरिंग फैक्टर क्या है हमारे लिए इन्फ्लेशन में, इंडिया के लिए? सो कोर इन्फ्लेशन है, एंड कोर इन्फ्लेशन में भी इट्स स्टिकी नेचर। सो कोर इन्फ्लेशन में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, या इतना ज्यादा फॉल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सो इट इज स्टिल देयर एट 6.1% मार्क, एंड कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन नहीं होती है। सो ये दो कंपोनेंट हेडलाइन इन्फ्लेशन के पार्ट होते हैं, बट कोर इन्फ्लेशन के पार्ट नहीं होते हैं। तो अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो दोनों डेफिनेटली हाई चल रहे हैं। बट अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को भी हटा दे तो स्टिल कोर इन्फ्लेशन इट इज ऑल्सो एट वेरी हाई लेवल ऑफ 6.1%। सो ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है कि कोर इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, बट कोर इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। जब हम इंडिया की पूरी जीडीपी की ग्रोथ करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, या आने वाले टाइम में हम ग्रोथ की बात करें, तो उस पे कोर इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट्स देयर, एंड डब्ल्यूपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम हुई है फेब्रवरी में। सो देखते हैं अब एमपीसी का क्या डिसीजन रहेगा। Now taking up important articles from the Financial Express. So कुछ new rules आए for the investment advisors and the analyst. So SEBI code cracks the whip on the risk-free returns promise जो किया जाता है by these advisors and the analyst कि risk-free returns आपको promise किए जाते हैं. So prior approval for the material required before printing अब आपको लेना पड़ेगा. And a month after directing the mutual funds to not assure the returns to the investors. इवन म्यूचुअल फंड्स को भी ये बोला गया है कि यू कांट अश्योर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। उसके बाद सेबी इट हैज आल्सो कम आउट विद एन एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट। सो अंडर दिस न्यू कोड ऑफ कंडक्ट जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट है, दे हैव बीन बार्ड from promising या guaranteeing assured or risk-free returns to the investors or making a reference to their past performance in their communications. So अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या रिसर्च एनालिस्ट हो, सो आप इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस या गारंटी नहीं कर सकते हो रिस्क फ्री रिटर्न्स, एंड अपनी पास्ट परफॉर्मेंस भी आप उसके बेसिस पे भी आप बेसिकली अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो इन्वेस्टर्स। बेसिकली ऑब्वियसली आपका मेन एम यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स आए, इन्वेस्टर्स आए विद देयर मनी। सो आप अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी साइट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज अ न्यू कोड ऑफ कंडक्ट जो चेंजेस किए गए हैं बाय द सेबी. So these entities they will not be able to use the superlative terms such as best, या फिर अगर आप बोलो कि आप नंबर 1 रिसर्च एनालिस्ट हो या टॉप एडवाइजर हो इंडिया में, या रिसर्च एनालिस्ट हो या आप लीडिंग हो या यू आर वन ऑफ द बेस्ट अमंग द मार्केट लीडर्स, सो आप ऐसी सुपरलेटिव टर्म्स भी यूज नहीं कर सकते हो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट योर क्लाइंट्स. एंड फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ द अवार्ड्स जो आपने रिसीव किए हैं फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो मेंशन किए जा सकते हैं, बट फैक्चुअल डिटेल्स की यहाँ बात हो रही है. सो दैट्स सम ऑफ द चेंजेस. सो स्ट्रिक्टनेस एंड रेगुलेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाय द मार्केट रेगुलेटर. मूविंग फॉरवर्ड, तो रिसेंटली स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी फॉर द व्हीकल्स, अगर आप उसके बारे में थोड़ा और फाइंड आउट करोगे सो दैट वुड हेल्प यू इन
गेटिंग द राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन, सो यहाँ पे थोड़ा डेटा की बात की गई है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो कल ही हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, हमने कल बात करी थी. आज वी टॉक्ड अबाउट दी सर्विसेज पीएमआई. सो सर्विसेज पीएमआई कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सर्विसेज पीएमआई भी अपवर्ड ट्रेंड पे ही चल रही है. सो रेड लाइन में आप देख सकते हो हाउ इट हैज बीन द ट्रेंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्विसेज पीएमआई. डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सो फिर से रिपीट नहीं करेंगे. मिल्क प्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, बिकॉज लंपी स्किन डिजीज, गवर्नमेंट का मानना ये है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ है इंडिया में, एंड ऑल्सो जो फॉडर कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हुए, सो उसकी वजह से मिल्क प्राइसेस दे आर इंक्रीजिंग. So this basically graph, it is showing output of milk over the years. So output definitely increase हुआ, but as per the demand, तो demand supply mismatch की वजह से shortage है. And since 1998, India, it is the largest milk producer in the world, and still despite this thing हमारी country में milk inflation देखने को मिल रही है. So this is the second biggest element after the higher prices of cereals, जिसकी वजह से food inflation increase हुई है. So India is going to showcase two key initiatives on animal health. So we'll be showcasing two new initiatives, that is the Animal Pandemic Preparedness Initiative. Animal Pandemic की बात हो रही है, Preparedness Initiative, and the World Bank funded Animal Health System Support for One Health. So that is going to be presented by India. So there's a plan to add 250 gigawatts of green energy capacity in the next 5 years. And the government has decided to invite bids for 50 gigawatts of renewable energy capacity annually. And India currently has a total renewable energy capacity of around 169 gigawatts. This we can say. Coming to the Indian Express now. So इस न्यूज के बारे में बात कर चुके. Protecting the citizens' rights, the court has reiterated that national security, it cannot be used in a casual manner to deny citizens their rights. And it said that while it would be unwise for the courts to define national security, this cannot be used as a tool to deny citizens remedies under the law. So आप ये reason नहीं दे सकते हो कि because of national security reasons आपको information नहीं provide की जाएगी, या उसकी वजह से, इस reason की वजह से जो citizen claim कर रहे हैं, ऐसा कोई petition है जिसमें कोई information provide करनी है आपको citizens को, but that is valid, बट आप रीजन ये दे देते हो कि बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आप उस चीज पे आप यू कांट गो अहेड विद दैट. सो उसकी वजह से अगर आप सिटीजन्स की राइट्स वायलेट कर रहे हो, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो गज उत्सव की हम बात कर चुके हैं, एंड इसके साथ हमने ये भी बोला कि प्रोजेक्ट टाइगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्प्लीट्स 50 years, एंड गज गज प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इट कम्प्लीट्स 30 years. सो दैट्स देयर. एंड after that, India, it has been elected to the UN Statistical Commission panel for 4 years. This is also we have already had a look at. Moving forward.
Coming to the editorial page, so the real war will never get in the books. This is the worldly wise for today. So this is in the context of recent जो अभी changes किए गए हैं in the NCERT textbook, specifically history की textbooks में कुछ चीजें delete की गई हैं that related to the Mughal history and some details even regarding Gandhiji's assassination. So basically, political element है इस decision में. So both what has been deleted in the textbooks and the opaque way in which it was done, they go against the spirit and the promise of the new education policy. So जिस तरीके से बेसिकली ये डिसीजन लिया गया या चीजें रिमूव की गई फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आपने कैसे डिसाइड किया कि इन चीजों को डिलीट किया जाएगा. सो दिस वाज कंप्लीटली ओपेक. इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिली एंड दिस वेरी क्लियरली गोज अगेंस्ट द स्पिरिट एंड प्रॉमिस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. So that's very, very clear. And as I told you, Delhi Sultanate से related, Mughal era से related चीजें delete की गई है. And even emergency जो थी, Gujarat 2002 riots and Mahatma Gandhi's assassination. So कुछ चीजें ये डेटा इससे भी related delete किया गया है from the NCERT history textbooks. सो कॉन्ट्रोडिक्शन देखा जा रहा है. एक साइड आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हो एंड दूसरी साइड आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. आपने कैसे डिसाइड किया कि क्या चीजें डिलीट की जाएंगी एंड क्यों डिलीट की जाएंगी? सो वो हमें तो नहीं पता, बट थिंग्स दे हैव बीन डिलीटेड यूनानिमसली. वी कैन से कि नॉट यूनानिमसली, सॉरी, यूनिलेटरली चीजें डिलीट की गई हैं. सो डेफिनेटली इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट है. ओनली देन यही टॉपिक्स क्यों सिलेक्ट किए गए? सो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली अराइज होंगे. तो वी आर न्यूट्रल नो मोर. सो हमने देखा रिसेंटली फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया है एंड दिल्ली माइट वांट टू वॉच क्लोजली व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो ऑन द आर्कटिक रीजन. सो इस ज्वाइनिंग का आर्कटिक रीजन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू क्लोजली वॉच दैट. And the induction of Finland, which has long been neutral in Moscow's prolonged conflict with the West, into the North Atlantic Treaty Organization this week, it is a major setback to Russia and also the President Vladimir Putin. So one of the many justifications the Russian leader offered for the aggression against Ukraine was the relentless expansion of NATO closer to Moscow's borders since the late 1990s. So ये definitely हमें पता है रीजन है. ये जब स्टार्टिंग में यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया का जो मेन रीजन था, why one of the main reasons कि why it attacked Ukraine is expansion of NATO. And रशिया का मानना ये है कि NATO it is now moving closer towards the countries which are located very close to Russia. So this was one of the reasons कि NATO expansion. And रिसेंटली फिनलैंड ने डेफिनेटली नेटो को ज्वाइन किया है. सो 31st मेंबर फिनलैंड बना है एंड इट हैज डबल्ड इट्स फ्रंटियर्स विद रशिया बाय एडिंग मोर देन 1300 kilometers to the line of contact. So Finland directly shares 1300 kilometers of borders with Russia. So since now it is a NATO member, so we can say कि जो रशिया का कंसर्न था that is turning out to be reality. एंड आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो इंडिया इट इज एन ऑब्जर्वर कंट्री इन आर्कटिक काउंसिल दैट सीक्स टू प्रमोट वाइड रेंजिंग cooperation इन द पोलर नॉर्थ. सो एज द आर्कटिक आइस कैप इट मेल्ट्स मिडस द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वी आर सीइंग ग्लेशियर्स इन आर्कटिक ओशन, दे आर मेल्टिंग. नॉर्थ पोल में दे आर मेल्टिंग. सो द हाई नॉर्थ इट हैज ऑब्वियसली बिकम अट्रैक्टिव कमर्शियली एंड कॉन्टेस्टेड जियोपोलिटिकली. सो सिंस ये रीजन हमारे लिए accessible हो जाएगा, so इसलिए it is becoming much more attractive from the commercial perspective and also geopolitically and from the security perspective. This region में basically activities are going to increase, and Finland and Sweden as they turn from neutrals to the Western allies now. So China raises its profile in the Arctic in the partnership with Russia, and the militarization of the high north appears inevitable. So
expectations यही है. पहले Finland and Sweden they were neutral countries, but since Finland ने join कर दिया and there are also news कि Sweden might also join NATO, so now they have become Western allies and obviously China भी चाहेगा कि उसका जो position है when it comes to even the Arctic region, China वहाँ पे भी अपनी hegemony continue रखना चाहेगा. So it would definitely go ahead for the militarization of even the North Pole. So that's there, and that in turn it might make the global governance of the Arctic region increasingly problematic. So definitely challenges तो increase होने वाले हैं because now that region is also becoming physically accessible for all of us क्योंकि glaciers melt हो रहे हैं because of climate change. तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी हमने बात करी मलयालम टीवी चैनल है मीडिया वन. सो अगर हम क्रिटिकल व्यूज की बात करते हैं तो हैविंग क्रिटिकल व्यूज या पुटिंग आउट देम इट डज नॉट मीन कि वी आर एंटी गवर्नमेंट. सो आर्टिकल 19 डेफिनेटली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, but criticism of the government policy it does not constitute reasonable restrictions under Article 19 Clause 2. So you have the freedom of speech and expression and उसके basis पे basically कुछ instances ऐसे देखे गए कि government ने उनको बोला that these are anti government speeches and उसके बाद से थोड़ा fear हो गया कि अगर आप कुछ मतलब बोलना चाहते हो तो आप बोलने से पहले पहले सोचते हो कि आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए. But leaving that aside, keeping that aside, Article 19 definitely it is a fundamental right and government policy के against अगर आप criticize नहीं कर सकते हो तो this is not a part of reasonable restriction. So you can definitely constructively and positively you can have critical analysis of government policies. So this is what basically Supreme Court is saying and this is not what I am saying. So let's be clear with that. And जजमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं सो इतना ज़्यादा डिटेल में हम फिर से नहीं जाएंगे. So trading forests for the trees. So in focusing on the building carbon stocks and plantations, proposed amendments to the Forest Conservation Act, it weakens the very purpose of this legislation, which is to protect and conserve India's forests. So simply aim of this act is to protect and conserve India's forests and कुछ basically amendments करने की बात की जा रही है. तो इट इज बीइंग सेड कि अगर वो अमेंडमेंट्स दे आर सक्सेसफुली डन और दे आर मेड तो जो वेरी पर्पस था ऑफ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वो डिफीट हो जाएगा थ्रू दोज अमेंडमेंट्स. So any review of this Forest Conservation Act, definitely it is an opportunity to make suitable concessions for the land that has traditionally been under the control of the indigenous and the forest communities. Even after the enactment of the Forest Rights Act, the scope for their consent that is eroded incrementally when it came to the diversion of the forest land for the development projects. So we are seeing कि demand for urbanization that is increasing and उसकी वजह से obviously आपको forest land ही divert करना पड़ेगा for other purposes. But जो हम बात करते हैं taking the views या permission from the indigenous community which are a part of that particular land and they definitely they do have the rights. So उसको overlook किया जा रहा है and now they may have no say on the extensive plantations that are envisaged on land on which they depend as communities. So basically forest communities जो हैं उनकी rights they are being violated. So the predominant idea of the proposed changes it is to build the forest carbon stock by raising plantations. So ये बोला जा रहा है कि plantations को raise करके जो forest का carbon stock है उसको increase किया जाएगा. And the bill it also seeks to make the land available for the developers to meet their legal obligation towards compensatory afforestation in lieu of the forest land which is diverted for the development projects. So land भी available किया जाएगा to the developers so that अगर forest land divert किया जाता है for any kind of developmental project, so definitely we have that afforestation compensatory act. So उसके अंदर आपको किसी और particular land पे you need to set up or basically forest के लिए you need to plant more and more trees. So land भी provide किया जाएगा as per the amendments जो बात की जा रही है.
So the bill tries to achieve both these objectives by restricting the applicability of this Forest Conservation Act. So इसकी applicability और restrict हो जाएगी, and by freeing up the land that is currently locked up as unrecorded forests. So जो land that is right now, as of now, it is part of unrecorded forest, उसको divert किया जा सकता है. So 1996 में सुप्रीम कोर्ट इट सस्पेंडेड द फेलिंग ऑफ ट्रीज अक्रॉस द कंट्री एंड इट रूल्ड कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है दैट वुड अप्लाई टू ऑल द लैंड पार्सल्स दैट वर ईदर रिकॉर्डेड as forest or they resembled the dictionary meaning of the forest. So in 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. So यहाँ पे हमने देखा कि अनरिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा है कि किसी भी टाइप का लैंड हो, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड का पार्ट हो एज पर दी रिकॉर्ड्स, एज पर दी पेपर्स, या फिर डिक्शनरी मीनिंग को भी इट रिजेंबल्स, फॉरेस्ट की जो डिक्शनरी मीनिंग है. सो आप उसमें ट्रीज को कट नहीं कर सकते हो या डिफॉरेस्टेशन के साथ आप आगे नहीं जा सकते हो. दैट इज एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री. And इस order की वजह से it helped in checking the rampant deforestation on land which was also not a part of the recorded forest land, but it also came in the way of excluding from the recorded forest vast areas that were already in the use for agriculture or as homesteads. So ये कुछ concerns हैं because of these proposed amendments to the Forest Conservation Act. And एक हमने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की भी बात करी. देन यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं in the past. So the bills focus on raising the tradable vertical repositories of the carbon. It can jeopardize the very purpose of this act, which is to protect and conserve the India's forests. So grant of bail, when we talk about the question of delay, even in the laws like NDPS, which is the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. So granting of bail में delays किए जाते हैं, and Supreme Court ने last week it held that undue delay in trial, it can be the ground for granting bail to an accused even under stringent acts like this NDPS Act of 1985. And ruling it is definitely very significant because the bar for bail otherwise it is very high under the law, and that is similar to the standards in anti-terror legislations. So kuch aisi acts hain which are on similar standards as the anti-terrorism legislation, and in acts ke andar bail milna bahut mushkil hai, but Supreme Court ne ye bola अगर बेल देने में अनड्यू डिले किया जाएगा, बेसिकली नॉट बेल में, सॉरी, ट्रायल में अगर अनड्यू डिले किया जाएगा, सो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे ग्रांट दी जा सकती है, चाहे वो ऐसी स्ट्रिंजेंट एक्ट्स की भी अगर हम बात करें तो उस केस में भी इट वुड बी एप्लीकेबल. सो यहाँ पे हमारे लिए प्रिजन रिफॉर्म्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एंड जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है इन इंडियाज प्रिजन, डेफिनेटली उसका शेयर बहुत ज़्यादा है. सो on those lines, Supreme Court judgment is based, and apart from that, normally जो NDPS Act है that is an exception to the ordinary rules for granting bail. So जैसे कि मैंने बोला कि this act is on similar standards जो कि anti-terrorism legislations के हैं, so आपको bail मिलना बहुत मुश्किल है. जैसे कि मैंने बोला, अगर there is delay in trial, so that is one of the bases. It can be one of the bases for granting you bail even in under these acts. So under section 37 of the act, for a court to grant bail, it has to be satisfied that there are reasonable grounds for believing that is basically the accused is not guilty of an offense and upon release isn't likely to commit any offense. So reasonable grounds होना चाहिए कि आपके पास belief हो for this thing. And now Supreme Court has said that the conditions
seeking the court's satisfaction to the extent that an accused is not guilty of an offense has to be interpreted reasonably. आपको interpret करना would be important. So 2008 में there was a verdict in the Vaman Narayan Ghia case versus the state of Rajasthan. So Supreme Court ने तब upheld किया था the stringent bail provisions under the NDPS Act by balancing the two competing values. So one value was the right of the accused to enjoy freedom based on the presumption of innocence and the societal interest. So these were the balancing of these two rights. But उस time पे 2008 में under this Vaman Narayan Ghia case, stringent bail provisions for the NDPS Act, they were upheld. So the present ruling has said कि they are at the same time upheld on the condition that the trial is concluded expeditiously. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर bail provisions they are stringent तो ट्रायल में डिले किया जाएगा. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो ये रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रायल डेफिनेटली एक्सपेडिशियसली किया जाना चाहिए एंड दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेबल एंड वैलिड कंडीशन. So undue delay in trial is not acceptable in any form. So अगर बाकी किसी लॉ की बात करें like NDPS, so we have the Unlawful Activities Prevention Act, we have the Prevention of Money Laundering Act. They stand out as they make the bail the exception rather than the rule. So 2021 decision in the Union of India versus the K.A. Najib case, 3-judge bench, it granted bail to an accused facing incarceration for an extended period with little possibility of early completion of the trial under UAPA. So उस टाइम पे भी बेल प्रोवाइड की गई थी. So Finland joins NATO. ये हम already discuss and analyze कर चुके हैं कि earlier there it was a neutral country, even to that matter Sweden, but now NATO join कर लिया है, तो it is now a Western ally. तो इकोनॉमी पेज पे हम PMI इंडेक्स की बात कर चुके हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए कुछ अमाउंट सैंक्शन किया गया है. So what is the scheme? So Stand Up India scheme basically 2016 में launch की गई with the focus on economic empowerment and job creation, and that has been extended up to 2025. So इसको extend किया गया है and it was aimed to promote entrepreneurship amongst women and SC/ST to help them in starting a greenfield enterprise in manufacturing, services or trading sector. So यहाँ पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है. तो अगर बिल्कुल आप स्टार्टिंग से कोई प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो दैट इज ग्रीन फील्ड. एंड अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस सेटअप है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई चैलेंजेस थे, एंड अगेन यू आर बेसिकली बिल्डिंग अपॉन दैट ओनली, आप बिल्कुल न्यू बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं चीजें, तो दैट इज ब्राउन फील्ड. सो ये क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है एंड ये टर्म ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है एंड पूछी गई है ऑलरेडी. दिस इज बीन आस्क्ड. एंड सेबी ने रिसेंटली जो एडॉक कोड इशू किया है फॉर एनालिस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस. So Apple is going to open a company-owned store in India. This is going to be the world's second largest and smartphone market. So India is world's second largest smartphone market. So leveraging that opportunity, Apple is going to open a company-owned store in India. So oil prices, they are stable as the economic fears balance the OPEC plus cuts and US stock draw. बट मार्जिनली फॉल हुए हैं, बट जब से ये डिसीजन लिया गया है उसके बाद डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं.
सो स्टेबिलिटी अभी शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. Here we complete the quality analysis of all the important articles that we had for 6th of April 2023, and I hope you have understood them very well, because I've put in my best to make you understand the things in a very simple and easy manner. And if you like it, please hit the like button for this video. If you've been finding the videos, analysis videos, useful for you, please subscribe to the channel. And also there is a PDF link that has been provided in the description box of this video, so you can go through that for your revision exercise. And that's all for today. Thank you so much for joining us.